Transformer is a device which steps up or steps down an input voltage. It works on the principle of electromagnetic induction. The construction of transformer is it has an iron core around which two coils are wound. The coil to which input is given is known as primary coil, and the voltage which is given to it is known as primary voltage, and the current it produces is primary current, and the number of turns is given as N. At output voltage, from where we take the output or we get the output is known as secondary coil. Number of turns of secondary coil are written as Ns. The voltage across secondary is given as S, and the current given is Is. Okay. One thing that we need to keep in our mind is there is no electrical connection between secondary and primary. Okay. Everything that is going in between primary and secondary is purely depending on this principle, which is electromagnetic induction. Are we clear up till this point? G. Can you repeat the label of the diagram? We have a iron core on which two coils are wound. Hmm. This iron core. This is used on which two coils are wound. The coil to which input is given is known as primary coil. The voltage of primary coil is known as Vp. The current is known as Ip. And the number of turns of primary is Np. Okay. Similarly, the coil from where we take the output is known as secondary coil. The number of turns of secondary coil is given as Ns. The voltage that is produced across secondary coil is Vs, and the current is Is. Okay? Okay. So, are we clear about the structure? That how it works? Sorry, how it looks and how it works. Now we're going to discuss how current is transferred from primary to secondary. There is no quicker way of erasing everything. Okay. जैसे हम लोगों ने जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर में एक शॉर्ट सा नोट बनाया था कि मोटर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, इनपुट पे करंट होता है, उसकी वजह से क्या क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. किसमें? कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. वो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट. और आउटपुट में मेरे पास क्या आएगा? मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द मोटर आएगी. ठीक है. जनरेटर्स में हमारे पास क्या होता था? जनरेटर्स में हमारे पास इनपुट में क्या चीज आती थी? मैकेनिकल मूवमेंट होती थी. किसकी? मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द कॉइल होता था हमारे पास, जिसकी वजह से चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस कॉइल होता था. Change of magnetic field across coil, this would induce EMF in the coil, Which will produce current. which will produce current as an output in generator. Same thing is going to happen in case of transformer. अब उसमें क्या होगा?
उसमें ये होगा कि इनपुट हमारा हमने इनपुट किस कॉइल पे देनी है? VP. Yeah. As input is going to be given at VP, so input हमारे पास आ गया VP पे, which would be the alternating voltage. Due to this alternating voltage slash current, क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस प्राइमरी क्रिएट होगा, क्योंकि चेंज ऑफ करंट क्या करता है? चेंज ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, और फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी एग्जैक्ट। ठीक है। जब हमने इनपुट पे ऑल्टरनेटिंग करंट स्लैश वोल्टेज दिया होगा, क्योंकि वोल्टेज देंगे वो करंट बनाएगा, वो करंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस प्राइमरी किसके साथ लिंक करेगी? एंड वी शुड कीप दिस इन माइंड, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बिकॉज इन इफेक्ट्स के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग वैल्यूज चाहिए होता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस प्राइमरी वुड बी लिंक्ड टू सेकेंडरी कॉइल। ओके। जब सेकेंडरी कॉइल के साथ ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगी, वी नो दैट ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट करती है? ईएमएफ इंड्यूस करती है। ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थी अक्रॉस प्राइमरी, वो लिंक हुई किसके साथ? सेकेंडरी कॉइल के साथ। और सेकेंडरी कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या इंड्यूस हुआ? ईएमएफ। ठीक है, जो हमें आउटपुट पे एज अ करंट मिलेगा। क्लियर? Mm-hmm. ओके, ये तो हो गया ये। अब हमने डिस्कस करना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। So this was just the normal transformer. या इट वाज जस्ट ट्रांसफार्मर, नॉट द टाइप्स व्हिच वी विल डिस्कस नाउ। स्टेप Okay. अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी आर लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मींस कि आउटपुट वोल्टेज would be greater than input voltage, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज would be less than input voltage, which means कि अगर हमारे पास ये आयरन कोर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मे बी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी 2 हो, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी क्या हो? 5 हो। तो इट वुड बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी आर 5 एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी आर ओनली 2, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इनके यूजेज क्या है? इनके यूजेज ये हैं कि वी नो दैट के वोल्टेज एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। विच मीन्स कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। अब व्हाई इज दिस दैट वी नीड? इट्स बिकॉज कि करंट जनरेट्स लॉसेस, एनर्जी लॉसेस होते हैं करंट की वजह से, हीटिंग लॉस होती है हमारे पास। ठीक है, जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर करंट को ट्रेवल करना होता है तो उतना ही ज्यादा, हमने पिछले पढ़ा था कि लॉन्गर द लेंथ लॉन्गर द रेजिस्टेंस, विच मीन्स मोर द एनर्जी लॉस होगा हमारे पास, एंड एज रेजिस्टेंस वुड बी ग्रेट, करंट क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। लेस क्यों होगा? क्योंकि वो वेस्ट
फॉर्म में जा रहा है हमारे पास। सो इन ऑर्डर टू सेव द एनर्जी हम वोल्टेज को क्या कर देते हैं अप, और करंट उसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है डाउन, और हम उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो जो पावर हाउसेज होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, एंड व्हेन इट रीचेस टू हाउस होल्ड्स वहां पे क्या होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। सो दैट वोल्टेज अप करंट लो, यहाँ पे वोल्टेज डाउन करंट अप हो जाए। क्लियर? Mm-hmm. Now the formulas that transformer uses is the turn ratio, that is Vs over Vp is equals to Ns over N। इनमें से कोई भी 3 वैल्यूज वो आपको दे देगा, फोर्थ वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की। Similarly, second one is power ratio. In ideal transformers, power input is equals to power out. Power input is VPIP and power output is PSIS, because power का फॉर्मूला क्या होता है V into I। तो यहाँ से Vs over Vp किसकी इक्वल आ जाएगा, Vs over Vp is equals to Ip over Is। This is the equation that we use for transfer. You can see that voltage and current are inversely proportional to each other. So when we increase the voltage, current automatically क्या हो जाएगा down हो जाएगा। Okay? Okay. अब हम अगर इक्वेशन 1 एंड The इक्वेशन 2 first को one, इक्वेशन 1 एंड is इक्वेशन it 2 को कंपेयर करें, सो वी वुड हैव Vs over Vp is equals to Ns over Np is equals to Ip over Is। तो ये रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं। for Yes, what what? we're talking about equation 1। Is it used in all transformers? Yes। Okay. And अब the one क्लियरली that जब you उससे just wrote? या लाइक उस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग जाएं तो उसमें ट्रांसफॉर्मर के अंदर उसने हमसे क्या पूछा हुआ था, अब आप मुझे आइडेंटिफाई करके सबसे पहले बताओ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन रही है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन रहा है। उसने यहाँ पे 8000 टर्न्स दिए हुए हैं, 240 वोल्टेज है, तो इसमें प्राइमरी कॉइल कौन सी बनेगी, ये या ये? Coil P. एंड व्हाई इज दैट? कॉज जहाँ पे इनपुट होता है वो हमारे पास क्या होती है प्राइमरी कॉइल होती है। Hmm. सो दिस इज द प्राइमरी कॉइल एंड coil S is the secondary coil। अब look at the number of coils that they have given। ये step up transformer बन रहा है, ये step down transformer बन रहा है। Step up. नंबर ऑफ टर्न्स देखें आप और वोल्टेजेस देखें, स्टेप अप है ये स्टेप डाउन है? Step down. अब ऑब्वियसली अगर इफ आई एम आस्किंग टू सी इट अगेन तो आप ये सेकंड ऑप्शन यही होगा ना। क्लियरली ये देखो 8000 टर्न्स दिए हुए हैं, इनपुट वोल्टेज कितनी है 240, आउटपुट वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, तो ये स्टेप अप बनेगा या स्टेप डाउन बनेगा? Coil P. अरे इनपुट वोल्टेज कितना दिया हुआ है उसने 240 वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज कितना जी। दिया हुआ है 6 वोल्ट, 6. तो ये स्टेप अप हो रहा है या स्टेप डाउन हो रहा है? Step down. ठीक है, Oh. cause Vp is greater than Vs, this means कि it's a step down transformer। Um. सेकेंड वे क्या था कि अगर उसने हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स बताए हुए होते तब भी हम आइडेंटिफाई कर सकते थे उसको। ठीक है, Okay. अब उसने फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, क्या फॉर्मूला होता था Vs over Vp is equals to Ns over Np। Vs की वैल्यू क्या है 6 वोल्ट एंड Vp की वैल्यू क्या है 240, Ns की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, whereas Np is 8000। Calculate the value of Ns, would be 6000 multiplied by 80,000
8,000 divided by 240. 6 4 से 24 होता है, I guess. Therefore, 200 आ जाएगा, I guess. Is it? Yeah. Now I we got know the that same. the number of turns of primary are 8,000 and number of turns of secondary are, 200. so it's a Step down. सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, अब उन्होंने करंट फाइंड आउट करने को बोला हुआ है अक्रॉस प्राइमरी, ठीक है, सॉरी उन्होंने करंट अक्रॉस प्राइमरी दिया हुआ है, उन्होंने हमें करंट अक्रॉस सेकेंडरी कैलकुलेट करने को दिया हुआ है, सॉरी पावर कैलकुलेट करने को दिया हुआ है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I times V. Yes. So power across primary would be VP into I. VP is 240 and IP is 0.50. We'll have 050 for 120 something after 124. 12. 0.05. Yeah. So primary voltage Okay. is 12 volt. Wait, explain the formula again. Power का formula V into I. V is 240, VP I क्यों is लिखा हुआ 0. है? प्राइमरी की वोल्टेज फाइंड आउट करनी थी तो सबस्क्रिप्ट लगा दिए कि प्राइमरी की पावर कैलकुलेट कर, Oh, सबस्क्रिप्ट है, it's not multiplying with it. okay. It might be a little bigger for the subscript, but it is. And then उससे current power input of the transformer is 90% of the power input is transferred to the lamp. Calculate the, अब हमें प्राइमरी करंट उसने हमें दे दिया हुआ था, उसका जस्ट 90% शिफ्ट होता है टू द क्या कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, सो 90% ऑफ करंट ले लो, क्या वैल्यू बनती है? You get the meaning? 90 over 100 times 0.05. आप सिंपली 90% मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट करते हैं, you will get this answer. Where's percentage? Yeah. 0.045. Yes, प्राइमरी का वोल्टेज उससे पावर इनपुट बोला हुआ है, सॉरी पावर इनपुट है तो पूरी पावर के ही लेंगे, पावर कितनी थी हमारे पास 12 वोल्ट 12 वॉट, सॉरी, तो 90% ऑफ 12 लेंगे, आई थॉट कि सिर्फ करंट लिखा हुआ, 90% ऑफ 12 watts is what value? 10.8 or 54 over 5. 10.8 watt is the power for secondary coil. Clear? अब पावर का फॉर्मूला अगेन वही यूज करेंगे, V into I. पावर ऑफ सेकेंडरी कितना है? 10.8. इनपुट वोल्टेज कितना था सेकेंडरी का, सॉरी वोल्टेज कितना 200. था? 6 था वोल्टेज, 6 वोल्ट था, इनटू करंट हमने फाइंड आउट करना है तो 10.8 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, 1.8. नाउ वी कैन क्लियरली सी, अब मैं रिजल्ट्स लिखता हूँ सारे, वीपी कितना था? 240 वोल्ट और उसका करंट कितना था? जस्ट 0.050. ग्रेटर द वोल्टेज लेस द करंट. ऑन द कॉन्ट्रेरी सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी थी? जस्ट 6 वोल्ट, उसका करंट की वैल्यू क्या निकला? 1.8. ठीक है. What about the turns? नंबर ऑफ टर्न्स ने भी तो वही किया ना, स्टेप डाउन वोल्टेज है, बिटवीन वोल्टेज वुड बी लेस, करंट वुड बी ग्रेटर. अल्लाह.